मैट्रिक के तलब इलम ने अपने ही हम जमात को फायरिंग करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। गेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ मैं ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਬਾਪੂ मैं स्कूल नहीं जाता। मुझे ये बताइएगा आपके बच्चे के साथ क्या वाकया पेश आया? सर जी सामने स्कूल हाई स्कूल है जी, इस दे विच मेरा बच्चा पढ़दा है 10वीं क्लास है जी। मेरा बच्चा कोई दफ्फी दा प्लेयर है जी, वो दफ्फी दुफ्फी खेड़दा है। दफ्फी दे उत्ते जिस मेरे बच्चे ਨੂੰ कतल कीता है कई दफ़ा मैच हराया ना तो ना जी इस वजह उन्होंने कुछ पसंद कोई नहीं जी। ठीक है। ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਈ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ। ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਜ ਲਈ। ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ? ਬਾਬੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨ ਵਾਲ ਚੱਪ ਕਲਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜ ਲਈ ਸਾਂ, ਵੇਖ ਲਈ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕੂਲ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। सर जी मैं नाश्ता करके बाहर निकलिया। चाचे का बेटा है, चाचा का कज़न पितरेर हो जी, उसने एक बच्चा लाना सी। मैंने आखिया यार मैंने बच्चा ला दी आप चक मूसन शाह जो नाल होता बच्चा खलोते। मैं चलो चलने कट्ठे। मैं कहा चलो यार उधर चलने पहले बच्चा मैं मैंने आके मैंने बच्चा धमकी ला रहे थे तो उस्ताद नाल गल कर लीए वो जो बच्चे नाल लड़ पैन। मैं फिर चलने उधर जी। असं जो तीनों कट्ठे गए स्कूल दे स्कूल जो रूम आई क्लास वाला उस दे कोल गेट जिस तरह पहुंचे ਤਾਂ ਅੱਗੂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨ ਹੈ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਯੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸਭ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੜ ਪੈ ਗਏ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿਸੇ रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਾਇਸਤ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। मैंने लगा जी बच्चे का खून काफ़ी डोल गया तो फौरी ब्लड का इंतजाम कर खून लैके आ। मैं सर जी बज बुझ के खून की बोतल लैके आंदी उन्होंने लाई है। वो कोई 20-25 मिनट बोतल खून की चली ना उस पहले बच्चा होश सी ब्लड लगन तो पहले 20-25 मिनट ब्लड चल गया जी। बच्चा होश चाहे 20-25 मिनट तो बाद फिर बच्चा ऐसा ऐसा बेहोशी के आलम में चला गया जी। वो बेहोश हो गया कोई 20-25 मिनट ही गुजरे बच्चे की डेथ हो गई जी। मेरा जवान बच्चा सी सर जी। मैं अपना बच्चा फौत होया घर वापस लैके आ गया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो मैं रिक्वेस्ट वज़ीर आला पाकिस्तान को करना चाहिए। मेरे बच्चे का हक मैंने दिलाया जाए जितना जल्दी से जल्दी। मेरी रिक्वेस्ट है सर जी, मैं नहायत ही गरीब बंदा मजदूरी करके बच्चे पढ़ाए थे सर। मेरे दिल दे विच तमन्ना सी मेरा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के जवान होया और 10वीं जमात पढ़ रहा। मेरा बच्चा मैंने कोई चंगी नौकरी दिलाओ। मेरा बच्चा नौकरी लगेगा मैंने मेरे घर के हालात सारे ठीक हो जाने। सर जी मेरे दिल जिस बच्चे के वास्ते बड़ी तमन्ना मेरा बच्चा मेरे सारे हालात ठीक कर देते। वो सारी उम्मीदें सर जी मेरी ख़त्म हो गई। रिजवान जो था आपसे जब मतलब कि अच्छे टाइम में आपसे गपशप करता था, बातें करता था, क्या कहता था मैं पढ़ लिख के क्या बनूँगा? वो मेरा बच्चा मना था अबू जी तू मैंने पढ़ा, मैं पढ़ सा ना मैं पढ़ गया हूँ तो मैं किसी चंगी सीट ते जा नौकरी लवाई सा। उन्होंने ज़्यादातर शौक आई सर जी, उन्होंने ज़्यादातर शौक आई मैं डॉक्टर बन सा, मैं डॉक्टर बन सा, मैं बच्चे आवाम की खिदमत करे सा, मैं डॉक्टर बन सा सर जी। और जब आखिरी उसका वक्त था क्या उसने कोई आपको आपके साथ क्या आखिरी टाइम में उसने बात की आपसे? मैंने वो एक ही गल करता अबू मैंने दर्द बड़ा मैंने टीका लवा दे, अबू मैंने दर्द बड़ा मैंने टीका लवा दे, अबू मैंने दर्द बड़ा मैंने टीका लवा दे। सब इस गल को थोड़ा करके बैठा मेरे बच्चे ने पिछले इन्होंने कोई ना मसला आवे। हमशीर का मसला सामने जी, बीवी का मसला सामने मोड़ी सबर है। वो जो जिस लड़के ने जो इसका कातिल था उसने पहले भी कभी उसकी फैमिली में से किसी ने कत्ल किया था? वो असर सूख वाले हैं क्या है? जी 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 जेड़े बच्चे मेरे बच्चे नूं मारिया ना जी, मेरे रिजवान नूं जिस बच्चे मारिया उसका सक्का चाचा जी उसने एक पहले कत्ल किया जी। जी सारे पहले भी उसने कत्ल किया जी।
جب آپ کی بیٹے کی ڈیتھ ہوگی تو انہوں نے کوئی آپ لوگوں سے رابطہ کیا یا آنے کی کوشش کی؟ نہیں رابطہ کیا. اگر مینو انصاف نہ ملتی میرا مالک میری عدالت کر سی سر. رضوان کے ساتھ آخری جو لمحات بیتے آپ اس کے کلاس فیلو بھی ہیں آپ کے مطابق، تو ذہن کس طبیعت کا بندہ تھا؟ کیا وہ بدماش تھا؟ کیا وہ لڑاکا تھا؟ وہ بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے، اور آج تک کسی کے ساتھ اس کی مطلب کہ کوئی غلط کلامی نہیں ہوئی، رانگ ایکٹیویٹی اس کی کسی بھی ادارے میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا بہت ہی اچھی باتیں کرتا تھا، اور ان کی یاد آج تک ستاتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی راتوں کو، کیونکہ ڈیپلی جو فرینڈ ہوتا ہے اس کی بڑی یاد آتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی اچھے تھے ماشاءاللہ سے، اور ان کی ایک شخصیت تھی. ہمارے فرینڈ جو ہوتے تھے، ہمارا ایک جو گروہ ہوتا تھا فرینڈز کا، اس میں ان کا ایک بڑا نام تھا، بڑا پہچان تھا.